وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inshallah, we now begin Surah Al-Rum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. غُلِبَتِ الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Alif Lam Mim. Have been defeated the Romans. غُلِبَتِ الروم have been defeated the Romans in the neighboring land. Fi adnal arz, in the neighboring land, and they from after their defeat sayaglibun, soon will become victorious in a few years. Busy sinin, in a few years. For Allah only belongs the command from before and after. And on that day, Yafrahul Muminun will rejoice the believers, binasrillah, with the help of Allah. He helps whomever He wishes, and He is the Almighty, Ar-Rahim, most merciful. Wa'adallah, promise of Allah, not breaks Allah His promise, and but most of the people, La ya'lamun, not they know. Ya'lamuna zahira min al-hayatid dunya, they know the outward of the life of this world, while they about the hereafter are ghafilun, unaware or heedless. अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान खूब रहम फरमाने वाला. अलिफ लाम मीम. मगलूब हो गए रोमी खरीब की जमीन में, और वो उनके मगलूब हो जाने के बाद जरूर गालिब आ जाएंगे कुछ ही सालों में. अल्लाह ही के लिए तमाम इख्तियारात, इससे पहले और इसके बाद भी. और उस दिन खुशियां मनाएंगे ईमान वाले अल्लाह की मदद से. वो मदद करता है जिसकी वो चाहता है, और वो खूब गालिब खूब रहम फरमाने वाला. अल्लाह का वादा नहीं तोड़ता अल्लाह अपना वादा, लेकिन अक्सर लोग नहीं वो जानते. वो जानते हैं सिर्फ ऊपरी चीजें दुनिया की जिंदगी के, और वो आखिरत के बारे में वो गाफिल हैं. In the early Meccan period, after the Prophet ﷺ started conveying the message before the people, there were two superpowers at that time. One was Rome, another was Persia. And these two superpowers went for war. And the Persians initially were victorious. The Meccan Quraysh, who were polytheists, mushrik, they had an affinity towards the Persians because the Persians also were polytheists. And the believers, the Sahabas, had an affinity towards, a natural affinity towards the Romans, because the Romans were by and large the Ahle Kitab. They had some concept of God, and therefore there was a natural affinity of the Sahabas and the believers towards the Romans. So when in this particular war the Persians won, then what happened? The Meccan Quraysh celebrated. So Allah subhanahu wa ta'ala is giving a prophecy that busy sinin, in a few years, and busy sinin refers to anything between 3 years and 9 years. Allah is giving a prophecy that within a short while, these Romans who have now been defeated will soon become victorious, and on that day, the believers also will rejoice. And this is another indication that today, you polytheists are having the upper hand or are dominant over the believers, but very soon these believers will become dominant over you. And this is a prophecy which Allah subhanahu wa ta'ala, by quoting the Persians and the Romans, is also giving to the Sahabas. And Allah subhanahu wa ta'ala says, if Allah wants, He can grant victory to whomever He wishes, for He is the Almighty, most merciful. ये अल्लाह का वादा है. अल्लाह ईमान वालों की हर वक्त मदद करता है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिनों पर बड़ा मेहरबान होता है. अल्लाह जब मदद करने पर उतरता है तो तादाद की कोई हकीकत नहीं रहती. There is no concept of numbers after that. And these are ample proof of so many wars that were fought under the banner of Islam. And in all those battles, how Allah granted victory to the believers is mind-boggling.
Allah sees the quality of the iman and accordingly gives his help or extends his help. So अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि आज ये रोमी मगलूब हो गए हैं और ये मुशरिक गालिब आ गए हैं, लेकिन कुछ ही सालों में, बिजी सीनिन, थोड़े ही सालों में, 3 साल से लेते हुए 9 साल के वक्फे में यही जो है ईमान वाले गालिब आ जाएंगे मुशरिकीन पर। और ये एक अलामत और एक पेशन गोई थी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वालों को उस वक्त दे रहा है। अल्लाह का वादा कभी भी सच्चा होता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट बिलीव इन इट। They only see this outward worldly life and conclude and form opinions, but they do not know the future, particularly about the hereafter, who is ultimately going to be successful there. They are unaware of this. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. Do not they reflect in their own selves? Not has created Allah the heavens and the earth and whatever between both of them except with truth and for a term determined. And really most of the people in the meeting of the Lord surely are disbelievers. क्या नहीं वो गौर व फिक्र करते अपने खुद पर? नहीं पैदा किया अल्लाह ने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है सिवाय हक के साथ और एक मुकर्ररा वक्त के लिए। और बेशक बहुत से लोग उनके रब की मुलाकात का जरूर इनकार करते हैं। अवलम यसीरु फिल अर्ज़ि फयंजुरु कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वतन व आसारुल अर्ज़ व अमरूहा अक्सर मिम्मा अमरूहा व जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून सुम्मा काना आखिबतल लज़ीना असाउस्सूअ अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि व कानू बिहा यस्तहज़िऊन. Do not they travel in the land, then they observe how was the end of those from before them. They were mightier than them in power, wa asarul arz, and they tilled the land, wa amaruha, and they populated it much more than what these have populated it. And had come to them rusuluhum bil bayyinat, their messengers with clear signs. Then not was Allah to wrong them, and but they were upon themselves doing wrong. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. Then was the end of those who committed evil, that they disbelieved or that they denied in the signs of Allah and they were at it mocking. क्या नहीं वो सैर करते जमीन में कि वो देखे कैसे हुआ अंजाम उन लोगों का उनसे पहले? वो ज्यादा थे उनसे ताकत में और उन्होंने जोती थी जमीन और उन्होंने आबाद किया था उसको कहीं ज्यादा इससे जो ये आबाद किए हैं। और आए थे उनके पास उनके रसूल वाज़ेह निशानियों के साथ। फिर नहीं था अल्लाह के उन पर जुल्म करे, लेकिन वो थे खुद अपने ऊपर जुल्म करते। फिर हो गया अंजाम उन लोगों का जिन्होंने बुरा किया, बुरा ही इसलिए कि उन्होंने झुटलाया अल्लाह की निशानियों को और उसका वो मजाक उड़ाते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जाके देखो, चलो फिर उस जमीन में देखो कैसे हुआ अंजाम उन लोगों का जो इनकार किया वक्त के रसूलों के पैगाम को, हालांकि वो बड़े ताकतवर थे। उन्होंने बहुत कुछ छानबीन की जमीन पर और उन्होंने काफी महारत रखते थे कई एक चीजों की तामीर करने में और उनने उनके जमीनों को ऐसे आबाद किया। ये लोग तो जो है 10 में का एक हिस्सा भी जो है इनको वो ताकत नहीं मिली, लेकिन उन्हीं लोगों को जो 10 गुना इनसे भी ज्यादा ताकतवर थे अल्लाह ने उनको बर्बाद कर दिया। तो कितनी देर लगेगी अल्लाह इनको बर्बाद करने के लिए? And Allah never is unjust to anybody until the people become unjust to themselves and try to disturb the equilibrium of this earth which Allah subhanahu wa ta'ala has established with laws. And when they break the laws, when they violate the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, after a period of time when Allah sends his punishment, then nobody can stop. And this is how communities before
were all destroyed because they challenged the prophets of their time and said, okay, bring that azab or bring that punishment if you are truthful. Mata hadal wa'du in kuntum sadiqin. When is that promise? Come on, bring it. Drop a piece of the sky on us and let us see if you are among the truthful in kuntum min as-sadiqin. So they put forth all kinds of challenges and defied the prophets until finally Allah's punishment came and wiped them out from the map of the earth. So Allah subhanahu wa ta'ala says, all this is because they denied in the signs of Allah and they started mocking at it. They made mockery of the message conveyed to them. उन्होंने उसका इस्तेज़ा किया, मजाक उड़ाया, तो यही उनका अंजाम हुआ, आखिरकार जो है वो तबाह बर्बाद हो गए. अल्लाहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु सुम्मा इलैहि तुरजऊन व यौम तक़ूमुस साअतु युब्लिसुल मुजरिमून. Allah originates the creation, then He will repeat it, then towards Him turjaun, you shall be returned. And the day will be established, the hour, yublisul mujrimun, will be plunged in despair, the criminals. Allah इब्तिदा करता है पैदाइश की, फिर उसका इयादा करता है, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे. और जिस दिन क़यामत और जिस दिन कायम हो जाएगी क़यामत, हैरान रह जाएंगे या मायूस हो जाएंगे मुजरिम. वलम यकुल्लहुम मिन शुरकाइहिम शुफाअउ व कानु बिशुरकाइहिम काफिरीन व यौम तक़ूमुस साअतु यौमइज़िन यतफ़र्रक़ून फ़अम्मा अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति फ़हुम फ़ी रौज़तिन युहबरून. And not will be for them of their partners any intercessors, while they with their partners will become disbelievers. And the day will be established, the hour, yawma'izin yatafarraqun, on that day they will be sorted out in groups. और नहीं होगा उनके लिए उनके शुरका में से कोई सिफारिश करने वाले, और वो हो जाएंगे उनके शुरकाओं के साथ इनकार करने वाले या शुरकाओं का इनकार करने वाले. और जिस दिन कायम हो जाएगी क़यामत की घड़ी, उस दिन वो अलग अलग ग्रोह में बांट दिए जाएंगे. अम्मल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति फ़हुम फ़ी रौज़तिन युहबरून व अम्मल लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखिरति फ़उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहज़रून फ़सुब्हानल्लाहि हीना तुमसूना व हीना तुस्बिहून. Then as for those who believed and did righteous deeds, then they shall be in the paradise or in the gardens, yuhbarun, rejoicing. And as for those who disbelieved and denied in our verses and in the meeting of the hereafter, فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ, then those will be in the punishment brought forth or presented. So glory be to Allah when you reach the evening and when you reach the morning. फिर रहे वो लोग जो ईमान ले आए और अमल किए नेक, वो बागात में खुश और खुर्रम रहेंगे. और रहे वो लोग जिन्होंने इनकार किया और झुटलाया हमारी आयतों को और आखिरत की मुलाकात का, तो वही लोग अजाब में पेश किए जाएंगे. तस्बीह करो अल्लाह की जब तुम करते हो शाम और जब तुम करते हो सुबह. सो ग्लोरीफाई अल्लाह व्हेन यू रीच द इवनिंग एंड व्हेन यू रीच द मॉर्निंग. सो ग्लोरीफाई अल्लाह. So glorify Allah. One more verse. So glorify Allah when you reach the evening and when you reach the morning. That's right. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. And to Him are all praises in the heavens and the earth, and in the evening and when you reach the noon. He brings out the living from the dead and brings out the dead from the living, and He gives life to the earth, bada motiha, after its death. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, and thus you will also be brought out.
और उसी के लिए तमाम तारीफें आसमानों और ज़मीन में और शाम के वक्त और जब तुम ज़ोहर करते हो, यानी उसकी तारीफ बयान करो, उसकी तस्बीह बयान करो। वो निकालता है जिंदे को मुर्दे से और निकालता है मुर्दे को जिंदे से, और ये जिंदगी बख्शता है जमीन को उसके मर जाने के बाद, और इसी तरह तुम भी बाहर निकाले जाओगे। I'll repeat the translation once again, follow it very carefully. And for him are all praises in the heavens and the earth, then you write in bracket, and glorify him in the evening and when you reach at noon. He brings out the living from the dead and brings out the dead from the living, and he gives life to the earth after its death, and thus you will also be brought forth. So these are the times which are, some of the Mufassirin have connected this with our 5 times Salah. But besides that, we should continuously or every time not forget to keep glorifying Allah, singing the praises of Allah, morning, evening, in the noon and at night. सुबह, शाम, दोपहर, रात, बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमें तस्बीह बयान करना चाहिए, उसके उसकी तारीफ के कलिमात जबान से निकालना चाहिए। सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्लाहु अकबर बोलो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बोलो, जो भी आपको याद है। Keep yourself always busy in the remembrance of Allah, but that doesn't mean that you sit in one corner and only do it. As you're moving about, as you're working, you can continue to recite these beautiful tasbihs and kalimas, and this will always keep you connected with Allah subhanahu wa ta'ala. Your thoughts will always be connected with Allah subhanahu wa ta'ala, and this is what Allah is saying. Because the moment a person, a believer, stays away from the remembrance of Allah, then that space which is left free is occupied by shaitan. जब मोमिन अल्लाह की याद से थोड़ा भी हट जाता है, तो फिर शैतान जो है उस जगह को पा लेने की कोशिश करता है। तो डोंट गिव स्पेस फॉर शैतान, constantly keep remembering Allah subhanahu wa ta'ala, morning, afternoon, evening, night, at all times. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. And among his signs that he created you from turab, from dust, then behold you became men, tantashirun, scattered. और उसकी निशानियों में से कि उसने पैदा किया तुम्हें मिट्टी से, फिर तुम हो गए इंसान बिखरे हुए. Now you'll find a series of Allah subhanahu wa ta'ala informing us of his powers, of his manifestations, of his signs. Allah says, reflect upon these. गौर व फिक्र करो अल्लाह की निशानियां, अल्लाह की जो कुदरतें हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो एहसानात हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का निज़ाम कितना बेहतरीन अल्लाह ने बनाया है. लुक इनटू इट, ponder over it, reflect over it. This is what Allah subhanahu wa ta'ala is. Now almost 6 or 7 signs of Allah subhanahu wa ta'ala he is enlisting here. Follow them very carefully. Out of which one, the first one we have just now heard, is Allah subhanahu wa ta'ala created man from turab, from dust. Then after that, what happened? Then of course the turab becomes nutfa, then the nutfa becomes alaqa. We know all that. And then Allah began his creation with Adam alayhi salam. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. He created from a single soul, that is Adam alayhi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, and from Adam alayhi salam he created Hawa alayhi salam. Wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisa, and from both of them he scattered the people all over. So this is one of the great signs of Allah subhanahu wa ta'ala, which Allah says, contemplate and reflect over it. Second verse which Allah talks in this series is, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. And among his signs, that he created for you from your own species your mates, that you may derive tranquility from her, and he placed between you mawaddatan wa rahma, love and mercy. Verily in that surely are signs, liqawmin yatafakkarun, for the people who reflect.
और उसकी निशानियों में से कि उसने पैदा किया तुम्हारे लिए तुम्हारे खुद के जिन्सों से तुम्हारी बीवियां, ताकि तुम सुकून हासिल करो उनसे। और उसने डाल दिया तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत, यानी मोहब्बत और रहमत। बेशक इसमें जरूर निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। Obviously, there will be mutual tranquility derived to each of them. Man derives tranquility from the wife derives tranquility from the husband. So, therefore, Allah subhanahu wa ta'ala has created this in a very unique way. ये बड़ा अनोखा अंदाज है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इंसान को सिर्फ एक ही स्पीशीज की नहीं बनाया बल्कि उसके जोड़ा बनाया. He created for you your partners, your wives, so that you may derive tranquility. And at the same time, he has placed between the husband and wife mawaddat and rahmat. Mawaddat means love, rahma means mercy. And it is mawaddat and rahmat that keeps the marital bond strong. And in all thick and thin, they come to each one's rescue and they help each other, support each other, console each other, and give the required and desired help rendered to each other. This is very crucial. And how does all that happen? Because of this two components which Allah has placed between every husband and wife, and that is mawaddat and rahmah. And these are great gifts of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah says, look into it. That's why you find the people as they grow old, then the bonding between husband and wife becomes stronger because they need each other at that point of time. They need each other's support. They need each other's help. They need each other to calm one another, to help them move forward in life. So very, very crucial stages when a person becomes and starts moving towards the old age bracket. At that point of time, then it is more relevant. And who has created that? Mawaddat and rahmat. It is Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says, ये एक निशानी है अल्लाह की, इसको गौर फिक्र करो. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. And among his signs is the creation of the heavens and the earth and the various your languages and walvanikum and your colors. Well, in that surely are signs for the people who have knowledge. और उसकी निशानियों में से पैदाइश आसमान और ज़मीन की और मुख्तलिफ तुम्हारी ज़बानें और तुम्हारे रंग, बेशक इसमें ज़रूर निशानियां हैं इल्म रखने वालों के लिए. So Allah subhanahu wa ta'ala says different languages. In each language also there are different dialects. You take any language for that matter, the way the people speak English in UK, the way the people speak English in Australia, and the way the people speak English in USA, and the way the people speak English in the Indian subcontinent or other places where people speak in English. Again, there's so much of difference in the way they talk. Their dialect is entirely different. In single language, likewise with every language, and so many languages are there. Thousands and thousands of languages are there. And Allah subhanahu wa ta'ala has created man in different colors. Some are very fair, some are average, some are wheat complexioned, some are dark, and some are very dark. All this for what? All this to recognize each other. وَجَعَلْنَاكُمْ شُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, that you may recognize each other. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ إِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, but the most honorable in the eyes of Allah are those who are the most God conscious. No white has a superiority over a black and vice versa. No Arab is superior to a non-Arab and vice versa. Prophet ﷺ gave this speech on the Hajjatul Wida. So Allah subhanahu wa ta'ala says these are different Allah's signs. Look into it. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. And among his signs is your sleeping at night and the day and your seeking of his bounties. Verily in that surely are signs for the people who listen. और इसकी निशानियों में से तुम्हारा सोना या तुम्हारी नींद रात को और दिन को और तुम्हारा तलाश करना उसके फजल में से, बेशक इसमें जरूर निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो कान लगाकर सुनते हैं. वमिन आयातिही युरीकुमुल बरखा खौफन
وَطَمَعُوا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. And among his signs, he shows you the lightning as a means of fear and hope, and he sends down from the sky the rain. Then he gives life with it to the earth, Bada Motia, after its death. Verily, in that surely are signs for the people who use their intellect. और उसकी निशानियों में से वो दिखाता है तुम्हें बिजली को खौफ और उम्मीद का जरिया बनाकर, और वो उतारता है आसमान से बारिश, फिर जिंदगी बख्शता है उसके जरिए जमीन को उसके मुद्दा पड़ जाने के बाद। बेशक इसमें जरूर निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल को इस्तेमाल करते हैं। वमिन आयातिही अन तक़ूम अस्समाउ वल अर्ज़ु बिअम्रिही सुम्मा इज़ा दआकुम दावतम मिनल अर्ज़ि इज़ा अंतुम तख़रुजून वलहु मन फिस समावाति वल अर्ज़ कुल्लुन लहू क़ानितून। And among his signs that he has established the sky and the earth by his command. Then when he will call you with a single call from the earth, then you will all come out. And to him belongs whoever is in the heavens and the earth. Everyone to him are devoutly obedient. और उसकी निशानियों में से कि उसने कायम रखा है आसमान और ज़मीन को, या थामे रखा है आसमान और ज़मीन को उसके हुक्म से। फिर जब वो तुम्हें बुलाएगा एक ही बुलावे पर तुम ज़मीन से उस वक्त निकल आओगे। और उसी के लिए है जो कोई आसमान में और ज़मीन में, हर एक उसी के लिए फर्माबरदारी अख्तियार करते हैं। वहुवल्लज़ी यब्दउल खल्क़ा सुम्मा युईदुहु वहुवा अहवनु अलैहि वलहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्ज़ वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। And he is the one who originates the creation, then repeats it, وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, and it is very easy for him. And to him are the attributes highest in the heavens and the earth, and he is almighty, all-wise. तो वही वो ज़ात है जो इब्तिदा करता है पैदाइश को, फिर उसका इयादा करता है, और वो बहुत ही आसान है उसके लिए, और उसी के लिए सिफात बहुत ही बुलंद है या बहुत ही आला है आसमानों और ज़मीन में, और वही खूब गालिब, खूब हिकमत वाला है। So we stop here for the day. Inshallah, we'll continue the rest of the verses tomorrow. Kindly do your homework, be on time, be regular. Jazakallahu khair. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.